morning students. Now today we will start our chapter 11, that is time and work. In this time and work, see your introduction. It is given to you, if a man finishes total work in D days. If a man finishes total work in D days. D डेज में अगर वो कंप्लीट करता है किसी वर्क को, इट मीन्स वन डे के अंदर वो उस वर्क का कितना पार्ट करेगा. कोई एक वर्क है जो वो कंप्लीट करता है डी डेज के अंदर, तो वन डे के अंदर इट मीन्स वो कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, दैट 1/d वर्क. इट मीन्स हम क्या करें, इसको 1 से डिवाइड कर दे 1/d वर्क, कि अगर वो किसी काम को फिनिश करता है 4 डेज में, तो इट मीन्स 1 डे में वो उस वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, दैट इज 1/4. इट मीन्स 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, देन यू कैन सी योर कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 1, कि 1/4 वर्क वो 1 डे में कंप्लीट करेगा. और अगर हमें ये पता है कि कोई पर्सन्स 1 डे में 1/16 वर्क कंप्लीट करता है, कि अपने काम का 1/16 पार्ट करता है, तो उस वर्क को करने में उसे कितना टाइम लगेगा. देन व्हाट वी कैन डू लाइक दिस, दैट 1 डिवाइड बाय 1/16, कि 1 में उस वर्क के पार्ट को डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट your number of days in which he complete or he finishes the work. See, conversely, if the work in 1 day that a man does is given, अगर 1 day का किसी का वर्क दिया हुआ है, तो number of days कैसे निकालेंगे, 1/1 days work. Okay, now see the question, examples related to this. A can do, example first, A can do a piece of work in 3 days. A है जो किसी वर्क को 3 डेज में कर सकता है. B can do it in 6 days. B can do it in 6 days. How long will A and B take together A and B take to complete the work, together. See, A can do a piece of work. कोई एक पर्टिकुलर वर्क है जिसको A कर सकता है 3 डेज में कंप्लीट, एंड B कैन डू इट इन 6 डेज. B उसको 6 डेज में कर सकता है. हाउ लॉन्ग विल A एंड B टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर. अगर A और B दोनों एक साथ काम करने लग जाए उस वर्क पर, तो वो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा. तो सी, वी कैन राइट डाउन, A कैन डू a piece of work in 3 days, then 1 day work of A is equal to 1/3 पार्ट. उस वर्क का कितना पार्ट वो एक दिन में कंप्लीट करता है, 1/3. B can do a piece of work in 6 days. It means 1 day work of B is equal to 1/6 part. If
in one day A and B together can do work is equal to, what we will do, दोनों अगर साथ में काम करेंगे ये 1/3 पार्ट को कंप्लीट करेगा, ये 1/6 पार्ट को कंप्लीट करेगा. देन 3 6 18, 6 + 3 9/18 इज इक्वल टू 1/2. मीन्स एक ही दिन में उस वर्क का हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. देन हाउ मेनी डेज, देन टोटल नंबर ऑफ डेज in which A and B together complete the work. How to find out? 1 divided by 1 day work of A and B, that is 1/2 is equal to 2 days. Then in 2 days A and B together finish the work. So this type we will solve these type of question. Now see the next example. A and B together can do a piece of work in 8 days. But A alone can do it in 12 days. How many days would be alone take to do the same work? A and B together can do a piece of work. A and B together can do a piece of work. How many days? 8 days. Then what we have to find out? In 1 day work, that 1 day work of A and B together 1/8 पार्ट, मतलब उसका वर्क का 1/8 पार्ट कंप्लीट करेंगे 1 डे में. बट A alone can do, work in 12 days. Then 1 day work of A alone is equal to 1/12 पार्ट. तो एक दिन में दोनों मिलके 1/8 पार्ट को कंप्लीट करते हैं. A अलोन कंप्लीट करता है 1/12 पार्ट को. इट मीन्स B अलोन कैन डू वर्क इन 1 day is equal to A plus B part 1/8 minus only A part. LCM 24, 8 3s are 24, 12 2s are 24, that is 1/24 part. So we can complete work in number of days equals to 1 upon work part, that is 1/24 is equal to 24 days. It means the same work B alone can do, complete the work in 24 days.
Okay, very easy exercise it is and has the same pattern, same type of pattern it has for every question. Example number 3, A can do a piece of work in 12 days, B can do in 20 days, they work together for 3 days. Okay. Example number 3c, A can do, I am directly write down, A can do any work in 12 days. B can do the same work in 20 days. They work together for 3 days. They work together for 3 days. And then A goes away. Then A goes away. In how many days B will B finish the work? कि B उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा. सी नाउ, A अगर 12 डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे वर्क ऑफ A इज इक्वल टू 1/12 पार्ट and 1 day work of B is equal to 1/20 part. I am doing directly, but you do with complete statement. Now if A and B together, then work how many complete? 1/12 plus 1/20, LCM is 60, 12 5s are 60, 23s are 60, 80 by 8/60. You can cut it, 4 2s are 8, 15, it means they will complete 2/15 part. 1 day में complete करते हैं 2/15 part. तो 3 days में दोनों मिलकर कितना complete करेंगे? For 3 days A and B together do the work. 3 multiplied by 2/15, that is equal to 2/5 part. A and B दोनों मिलकर उस वर्क को 3 days में कंप्लीट कितना कर देंगे? 2/5 पार्ट. देन आफ्टर A गोज अवे, मीन्स दोनों ने मिलकर 3 days में इतना पार्ट कंप्लीट किया. देन आफ्टर A गोज अवे, देन रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क. Whenever we want to find out like this, then always take that complete work as a 1, then it becomes 3/5 part. 3/5 part complete करना है B को. B 1 day में कितना पार्ट कंप्लीट करता है? 1/20. तो 3/5 पार्ट को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 1/20 पार्ट कंप्लीट करता है B 1 डे में. तो 1 पार्ट कंप्लीट करेगा कितने में? 1/1/20, दैट इज इक्वल टू 20 डेज में. 3/5 पार्ट, 20 मल्टीप्लाई बाय 3/5, दैट इज 12 डेज. इट मीन्स इस 3/5 पार्ट को कंप्लीट करने के लिए B को कितना टाइम चाहिए? 12 डेज. Your question is how many days will B finish the work? कि after A and B, A goes away after 3 days, then after B will do this work for the 12 days, then it completes the work. Okay, see now. Question number 4, Ashish can paint the doll in 20 minutes and his sister Chinky can do in 25 minutes. They paint the doll together for 5 minutes. At this juncture, they have a quarrel and Chinky withdraw. In how many minutes will Ashish finish painting the remaining doll? It is the same type of question as you solved in example 3rd. Now see example 5th. A and B can do a piece of work. Example 5th. A and B can do piece of work in 10 days.
B and C can do piece of work in 15 days. A and C together 12 days. How many long they will take to together and each separately? इसको अलग अलग कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे और टुगेदर तीनों मिलके एक साथ कितने में कंप्लीट करेंगे. सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सी a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी. 1 day वर्क ऑफ A and B 1/10. 1 day work of B and C 1/15. 1 day work of A and C 1/12. It means if they together work, that is A plus B plus B plus C plus A plus C, it means they together twice of work. In how many days? 1/10 plus 1/15 plus 1/12. LCM 60, 15 4s are 60, this 4 5 9 or 6 15, that is 1/4 work. This is the twice of this. It means A plus B plus C only, then 1/4 divided by 2 is equal to 1/8 part. They do complete. Then how many days they will take? That A plus B plus C will take total 8 days to complete this work. Now see, if we want to find out separately that A can do work in how many times, B can do work in how many times, how many days, like this. Now see that it is the part that A plus B plus C can do work in 1 day 1/8 part, and A and B can do work in 1 day 1/10 part. It means A plus B plus C minus A plus B. If we do, then we get that C can do work in how many times. That A plus B plus C part is 1/8 minus C's work is equal to 1/8 minus 1/10. LCM 40, 1/40. It means in 14 days C will complete the work. If I subtract this one, you will get A's work. Then A's work, how many part? 1/8 minus 1/15. Then you can take 8 or 15. LCM is 120. 15 8s is minus 8. Then 7/120. Then you can take 120/7. Similarly for B, we can find out the work that 1/8 minus 1/12, then you will get the work of B only. So you can solve according to these example. Your exercise 11A, only one exercise I think here, okay. And in the next lecture we will discuss about the problems on pipes and cisterns and some question of our exercise. Thank you student, have a nice day.